Hello, students, everybody out there. Welcome to the last session of this series, and I'm really so excited. I hope you are excited as well. So, during this series, I tried my best to do justice to this book, to cover as many roots and clusters as possible in the most strategic way so that you hugely benefit from this series. And I hope you have. So now that I have done my groundwork, the onus lies on you. It is your turn now. You have to learn these words. Promise me that you will see, you will carefully watch each and every session if you haven't so far, and you will jot down all those amazing words. And of course, as I keep reiterating, revise and reinforce. Incorporate those words as a part of your functional vocabulary so that you keep using those words. See, you have to create an environment for English. If you simply sit down cramming words from a word list, it doesn't work that way. It'll be a very forced thing. So you have to, in a way, be very actively involved in your language development. And that thing is a 360-degree dimension. You'll have to read a lot, you'll have to speak the words, and above everything, you have to work on your comprehension, on your grammar, but at the same time, vocabulary is at the center, I believe. It is the bedrock, it is the pivot of your language development. The more words you learn, the better you become. So without much ado, let's now dive in to the topic. So I'm sure you're eager to know आज हम क्या करने वाले हैं specifically. We're doing vocabulary based on equality and freedom. So as always, I have come up with this interesting theme, such a desirable term, equality, freedom, justice, liberation. I think these are the ideals of every society. These are the things that we all aspire to achieve, hence they become so important. You will come across these words a lot in your passages, right? A lot, many books and articles and editorials are centered on these things. So, of course, this vocabulary is going to help you in your general reading as well. ठीक है? सो हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ रूट्स लेंगे, हम कुछ क्लस्टर्स लेंगे इसके ऊपर, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. या सो आई वुड लाइक टू बिगिन विद दिस रूट वर्ड equi. And what does equi mean? Equi means equal. As very tacit, as very obvious. Equi root से कुछ बहुत interesting words बनते हैं. Of course, equi root से बनता है equality, समानता. We all know about equality. Equity is another very interesting word. तब equity क्या होता है? Equity is about fairness, is about justice, right? अब nuanced अगर मैं आपको vocab बताऊं, उस एंगल से इक्विटी और इक्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. इक्वालिटी वुड allocate the same resources to everybody, but equity feels that not everybody starting from the same starting line. Okay, हम चाहते हैं कि, and we have to acknowledge that every person is not equal, right? Some people are very backward, so they would need more help, they would need more resources, whereas there are others who are already privileged, they would require less resources. So since the starting line is different for different people, right, there's some marginalized sections of the society, so we'll have to give them a little more. That is the concept of equity. ठीक है? Equality, give same thing to everybody. Equity, be a little more practical, understand who needs more, who needs less, and accordingly allocate this and distribute the different resources and ensure that there is justice and fairness. So देखा जाए broadly तो दोनों similar है, काफी similar है, और it actually represents the notion of a very fair system. So I hope equity is clear. Inequity क्या हो जाएगा? उसका opposite हो जाएगा. तो बहुत ही simple language में equity simply मैं बोलूँ justice या the concept of fairness. ये fairness गोरा वाला fairness नहीं है. I hope you understand that. Now there are two very interesting words here. Equable and equanimity. Equanimity का ही एक adjective form होता है equanimous. ठीक है. Equanimity actually
ट्रांसलेट्स टू इक्वल माइंड। देखो इक्वी तो आपको क्लियरली उसमें दिख रहा है, एक और रूट है एनिम, शायद मैं पहले बता चुकी हूं, और एनिम का मतलब होता है माइंड, वेरी एसेंशियली एंड वेरी कॉमनली स्पिरिट। तो इक्वानिमिटी ट्रांसलेट्स टू इक्वल स्पिरिट, एज इन जब आप में इक्वानिमिटी है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो, आप बहुत ही इक्वल और बैलेंस्ड माइंड से उसको हैंडल करते हो, उसको टैकल करते हो, right? So if you're an equanimous person, you're very calm and collected person, right? आपको मैं थोड़ा सा stoic भी बोल सकती हूँ, you have a very balanced temper, ठीक है? You're very calm and collected, equanimous. इक्वल रहता है आपका, मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर थोड़ी सी भी टफ सिचुएशंस हैं तो आप बहुत ज्यादा फ्लस्टर्ड हो जाओगे और डिस्करेज हो जाओगे या गिव अप मार दोगे, राइट? आप बहुत ही बैलेंस्ड हो, इक्वल ट्रीटमेंट देते हो आप एक तरीके से हर सिचुएशन को, राइट? सो इक्वानिमस जो होता है उसका मतलब क्या हो गया? वेरी काम एंड कलेक्टेड, वेरी कंपोज्ड, ठीक है? एंड इक्वेबल मीन्स द सेम। तो ये दोनों क्या है? सिनोनिम्स है। Is this much clear, everybody? Okay. Equinox, geographical term है. There are some days where there's equal night and equal day. आपको पता है, in summers we have longer days, right? While in winter we have longer nights. But then there are some days around the year where you have equal day and equal night in terms of the number of hours. राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स, ठीक है? थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, टेक्निकल टर्म है, बट पता होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए ठीक है। सो वी आर ऑलरेडी थ्रू विद दीज वर्ड्स, राइट? इक्विटी, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, जस्टिस, फेयरनेस। इनइक्विटी जब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, इट्स द ऑपोजिट ऑफ इक्विटी, ठीक है? एंड इक्वेबल एंड इक्वानिमिटी आर द सेम, इक्विनॉक्स इज इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। Another very amazing word that stems out from this root equi is equivocate. Okay, equivocate, equi is equal, we already know, voc is voice. Matlab, this is very similar to prevarication or circumlocution that I believe I've already discussed with you, right? So equivocate is जब आप you're beating about the bush, आप equal way में बात करते हो। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि what do you say, what would you side with, right? Group A और Group B, हाँ ग्रुप ए भी अच्छा है, ग्रुप बी भी अच्छा है, मतलब आप क्लियर बात नहीं कर रहे हो डेलिबरेटली विद द पर्पस और विद द इंटेंशन ऑफ ईदर मिसलीडिंग पीपल or thinking that I may escape as and when required. So that is called equivocation. The same is prevarication. That means whenever you speak evasively. Evade करना क्या होता है? Escape कर लेना, है ना? तो मैं एकदम क्लियर बात नहीं करती हूँ यार, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी मुश्किल आएगी, कुछ भी होगा तो मैं एस्केप कर जाऊं। दैट इज इक्विवोकेट। इक्विटेबल, इक्विटी से ही बना, ठीक है? सो इफ आई से दिस इज एन इक्विटेबल सिस्टम और आई वुड रादर पिच फॉर equitable allocation of resources, right? This is going to be the usage of equitable. Is this much clear? Equity से ही बना equitable. तो promoting justice, promoting equality and fairness would be the meaning of equitable. Equilibrium, I think ये तो बहुत ही आसान है, आप सब समझ ही रहे हैं इसके बारे में. So equilibrium, when there are equal forces acting from all sides and so there is a resultant balance, right? एकदम balance बन गया है और वो stable है वो system, तो हम बोलते हैं the system is stable, it's in its equilibrium. Equivalent, equal. Almost equal. Equivalent, right? I think this is very easy. And yes, these terms which are jargons, which are mathematical jargons rather, so equidistant, equal distance पर, right? Equilateral, ठीक है? मतलब same sides, equiangular मतलब same angles. So I feel ये तो words हैं, ये तो आपको already पता है. So the interesting words that we learned were equity, equitable, equivocate, है ना? Equable, equanimous.
or equanimity. So these are some amazing words that we learned from this root. And now finally time for a cluster. चलो भाई बताओ. ये मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू दिस थीम उसको पुट डाउन किया है, राइट. As I've already mentioned that this is going to help you a lot in your reading. ये words आपको commonly मिलेंगे बहुत सारे write-ups में. So it would be a great idea to be familiar with these words. So what is egalitarianism? Egalitarianism is again a concept of equality, a system of equity. ठीक है. So I say I dream of an egalitarian society around the world. मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे इक्वालिटी हो. ठीक है. Inclusion. Now, of course, inclusion word तो simply means including people, but in this context, अलग वे में लिया जाता है. In fact, to be a little specific, हम बोल सकते हैं social inclusion. We also have words like financial inclusion. पता ही होगा आपको इनके बारे में. If you don't know, then this is something you must know anyhow. तो सोशल इंक्लूजन का मतलब क्या हो गया कि सोसाइटी में आप अलग अलग टाइप के लोगों को इंक्लूड करो. ठीक है. दैट्स द ऑब्जेक्टिव. इंक्लूड करो से मतलब क्या है? द रीजन बीइंग दैट वी वांट नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. एवरीबॉडी शुड फील दैट दे आर अ पार्ट. ओके. अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, रिलीजन्स, कास्ट, सब कास्ट, राइट, एथनिसिटी. सो सोशल इंक्लूजन वुड मीन सबको साथ लेके चले. कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास. दैट इज इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन, इवन द पुअर पीपल दे शुड ऑल्सो बी इन द फाइनेंशियल नेट, राइट. तो इंक्लूजन का मतलब होता है सबको हम इकट्ठा लेके चल रहे हैं, और इकट्ठे हम सबको तभी कर पाएंगे जब उनको हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, इक्वल फुटेज देंगे और बैकिंग देंगे जहां जहां पे भी रिक्वायर्ड है. मार्जिनलाइजेशन करेंगे तो इक्वालिटी कभी नहीं अचीव हो सकती. व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? कैसे याद रखोगे इस वर्ड को? आपने पेपर देखा है, पेपर का मार्जिन कितना थिन होता है ना, या फिर टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन. तो मतलब किसी को आपने मेन स्ट्रीम से अलग हटा दिया, कोने में फेंक दिया, उसको मार्जिन की तरफ फेंक दिया. मतलब बहुत ही कम उसको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है सोसाइटी में. दैट इज मार्जिनलाइजेशन. ठीक है. दैट्स व्हाई वी से द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी शुड बी गिवन equal footage, should be given a lot of support and backing. ठीक. Alright. Parity is another interesting word. इसकी भी etymology देखेंगे हम. Parity comes from the root par, and par also means equal. ठीक है. तो parity भी हो गया है कि समानता, sameness, equality. par का भी मतलब equal होता है. Very soon we will be talking about this. Okay. चलो. ठीक है. Nice. So parity, par se bana, which also means equality. For example, I say that I am the HR manager and I have to do some recruitments, and a person who is a potential select for the company demands an exorbitant salary, and I say no, I can't pay you that much because I have to consider the parity within the organization. Right? People at your posts are drawing much less salary, so this salary that you're quoting is not justified. Right? So I have to honor the parity, equality, right? Same salary for same work. That's a notion of justice and equality, right? Okay. Meritocracy. Now, meritocracy का मतलब क्या हुआ? Very interestingly, ये बनता है दो रूट से. rather रूट इसमें एक ही हो गई, क्रेसी, और जो दूसरा वर्ड इसके साथ लगा है वो है मेरिट. क्रेसी का मतलब क्या होता है? क्रेसी मीन्स रूल. ठीक है. और इवन अ सिस्टम. एंड मेरिट हम सब जानते हैं. व्हाट इज मेरिट? ठीक है. आप में जो पोटेंशियल है, आप में जो एबिलिटी है, राइट, दैट इज योर मेरिट. सो मेरिटोक्रेसी literally translates to the rule by merit or the rule of merit. मतलब कि a system or a rule where merit would be valued no matter
what is your lineage, no matter what place do you belong to, no matter how long have you been working in this organization, essentially it is your abilities, it's your merit, it is your talent, it is your work that will speak for you, and you will progress accordingly. तो अगर आप में मेरिट है तो आप आगे बढ़ोगे, मतलब ये भी बहुत ही इजैलिटेरियन सिस्टम है ना, मतलब यू प्रूव योर सेल्फ और आगे बढ़ो, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सिस्टम दैट रिवॉर्ड्स मेरिट, ठीक है. सो मेरिटोक्रेसी ऑफ कोर्स वुड रिफ्लेक्ट and would honor the notion of equality. Pluralism. Pluralism तो आप समझते ही होंगे. Ours is even a pluralistic society. तो अगर हम pluralism as a concept की बात करें, बहुत simple language में बता रही हूँ without getting into the nuances and the technical jargons here, right? It simply means कि आप अलग अलग प्लूरल एंटिटीज के लोग जो हैं वो आपकी सोसाइटी का हिस्सा हैं और आप उनको साथ लेके चल रहे हो. यू ऑनर देयर डिफरेंसेस, यू ऑनर देयर इंडिविजुअलिटीज एंड दे पीसफुली को एग्जिस्ट. मतलब वेरी सिमिलर टू एज वी से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट. तो प्लूरलिज्म यही हो गया कि डाइवर्स होने के बाद में भी आप एक सोसाइटी आपने बना ली है, दैट इज प्रीटी मच इंटीग्रेटेड. Desegregation. देखो यहाँ पे इन दिस इमेज ऑफ कोर्स आपको जेंडर इक्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, बट इक्वालिटी इज अ वेरी वास्ट टर्म, राइट. अलग अलग नेशनैलिटीज, एथनिसिटीज, राइट, कास्ट, रिलीजन्स, ठीक है, रीजन्स, किसी भी बिना पे आपको हर सिस्टम में इक्वालिटी एक डिजायरेबल चीज है ना. तो उसका एम्बिट बहुत वास्ट है, ये समझो. डिसेग्रीगेशन, आप सब सेग्रीगेशन समझते हो. टू सेग्रीगेट इज टू सेपरेट, और डी लग गया मतलब इट्स अ नेगेटिव प्रीफिक्स, मतलब सेपरेट नहीं करना है. ये बकायदा एक प्रॉपर टेक्निकल टर्म की तरह इस्तेमाल होता है. डिसेग्रीगेशन मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका, है ना. साउथ अफ्रीका में एपाथीट बहुत ज्यादा था, यानी कि ब्लैक्स के खिलाफ इनफैक्ट ओवर द वर्ल्ड रहा है, आज तक है बहुत ही ज्यादा, हम जिसको कहेंगे रेसिज्म बोलेंगे, राइट. तो वो बहुत ज्यादा है. तो ये डिसेग्रीगेशन प्रोग्राम्स चलाए गए सो दैट वी स्टॉप सेग्रीगेटिंग देम. The whites always felt that they, due to their fair skin and due to their better standing in terms of economy, right, and power in terms of international politics, they always felt they were superior to the blacks and the browns, right. तो उस white supremacy को खत्म करने के लिए और ये जो blacks के साथ में होता रहा discrimination, उसको खत्म करने के लिए desegregation किया जा रहा है. मतलब we have to give them a fair treatment, right, and their rights should be given to them anyhow, right. There should be no discrimination, they should not be segregated. Similitude. What is similitude? Okay, देखिए similitude जो word है ये sameness, similar से बना, similar, या जिसको हम बोलेंगे ना बीइंग सेम. तो सिमिलिट्यूड है दो एंटिटीज में, मतलब दे आर वेरी सिमिलर, ओके. एंड यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट दिस वर्ड. आई थिंक दिस वाज एज सिंपल एज इट साउंड्स. सिमिलर से बना सिमिलिट्यूड. व्हेन टू थिंग्स, एंटिटीज, ग्रुप्स हैव सिमिलिट्यूड, दे हैव अ लॉट ऑफ रिजेम्बलेंस, ठीक है. ओके, सो इक्वालिटी पर ये कुछ वर्ड्स थे. अब आते हैं फ्रीडम पे. ये देखिए, breaking the shackles, right, breaking free, liberate होना. फ्रीडम किसको नहीं अच्छी लगती आजकल का, मतलब 4 साल का बच्चा भी फ्रीडम की बात कर रहा है ना. मम्मा आई वांट टू ईट इट, व्हाई आर यू नॉट लेटिंग मी ईट, दैट्स माय लाइफ, इट्स माय फ्रीडम, ऐसा बोल रहे हैं बच्चे भाई. तो फ्रीडम, ऑफ कोर्स देयर सम वर्ड्स जो आप ऑलरेडी जानते होंगे. चलिए ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट लिबर्टी, फ्रीडम का बहुत ऑब्वियस सिनोनिम. Autonomy, I think your words, you are, these are words which are very common and known to you, but still I'm trying to in a way put them up so that it's very strategic and they're right in front of you. You jot them down and you benefit, you never forget them. यहाँ पे कुछ words शायद आपके लिए थोड़े से नए हो सकते हैं, but the rest I think are known to you.
ऑटोनॉमी, ऑटो मतलब सेल्फ, है ना? तो मतलब कि जब आप ऑटोनॉमस हैं, आप एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह काम कर सकते हैं. यू आर ऑटोनॉमस, यू हैव द ऑटोनॉमी, यू हैव दिस पावर दैट यू कैन टेक डिसीजंस फॉर योरसेल्फ. ठीक है ना? सिंपल. ओके. सेल्फ रिलायंस, व्हेन यू आर self dependent or rather independent, है ना? तो the same as your independent. Self reliance मतलब you are not relying on anybody else. आप किसी और पे rely नहीं कर रहे, depend नहीं कर रहे. Self subsistence, subsistence is for your survival, something that you need. For example, you say many sections of the society don't have the basic means even for their subsistence. तो सबसिस्टेंस वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है. वी इवन हैव दिस टर्म कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग. यानी कि आप फार्मिंग कर रहे हो कमर्शियल यूज के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को फीड करने के लिए. राइट? आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसी स्केल पे कर रहे हो एंड यू कंज्यूमिंग इट. दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग. वैसे ही there's this concept of subsistence wage, जो कहता है कि बंदे को उतना ही वेज दो कि बस वो सरवाइव कर पाए, बस 2 टाइम का खाना मिल जाए, तन पे कपड़ा मिल जाए, छत वत तो कहीं पे भी बेसिक एकदम टेम्पररी उसको छत मिल जाए. दैट इज द नोशन ऑफ सबसिस्टेंस वेज. फिर उसके बाद में रिविजन आए ऑफ अ फेयर वेज, जो कह रहे हैं नहीं यार अच्छा पे करो, ठीक है, बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए. सो सेल्फ सबसिस्टेंस मतलब आप सबसिस्टेंस इजिली पा रहे हो ऑन योर ओन. You are free economically, right? That is self-subsistence. Sovereignty, we already know about sovereignty, right? It's a kind of self-rule. If you're a sovereign nation, right, you are independent. You have your own system, okay? And you are not dependent on any other countries in the sense that they don't meddle with your polity. You have an independent polity and government and entire system of your own. Enfranchise. So यहां पे भी जैसे कि सफरेज है, पहले मैं आपको सफरेज बता दूं. सफरेज इज बेसिकली द राइट टू वोट. दिस इज इंटरेस्टिंग. कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सफरेज इज समथिंग रिलेटेड टू सफरिंग, बट ऐसा नहीं है. इट्स गॉट नथिंग रिलेटेड टू सफरिंग. ठीक है? So you've got to understand that suffrage is a different word. Okay? It means right to vote. Women's suffrage would mean the right to vote by women. All right. So finally, my question stands here that what do you think is enfranchise? Now, people normally think that franchise and being a franchise center उन lines पे सोच रहे होते हैं जो एक commercial word है. But here, franchise is the same as suffrage. That means the right to vote. एक और meaning उसका निकल के आता है simply to set free. Mostly a slave or someone जो bound था, जो अभी तक बंदिश में था, जो कैद था, उसको आपने फ्री कर दिया. तो दोनों मतलब है. ठीक है? एक तो टू सेट समवन फ्री, टू लिबरेट समवन, एंड द सेकेंड इज राइट टू वोट. ठीक? ऑलराइट. Deliverance is also the same. It means rescuing someone, to rescue someone or to free someone. So, for example, we say the parents of the kidnapped child tried their best for the deliverance of their child. ठीक है? ठीक है? Or the government tried the best to ensure deliverance of the hostages. Deliverance का यूसेज समझिए. कोई भी नया वर्ड आप सीखते हैं, मेक श्योर कि उस पे आप 2 से 3 sentences देखें. And the day you're able to use the word and make your own sentences, that is when you actually become completely self-sufficient in using those words, right? So try to master those words. Emancipation is a common word. We often speak of women emancipation. It again means liberation. Okay? Liberating someone.
इंडिपेंडेंस वी ऑलरेडी नो. सो इसमें जो बहुत बढ़िया वर्ड्स हमने सीखे वो क्या थे? I am sure you already knew about liberty, autonomy, self-reliance. I think self-subsistence was a nice word. Sovereignty, आपको पता होगा नहीं पता होगा, but it's a very important word. आपको बिल्कुल मिलेगा articles में, essays में, अपने passages में, parajumbles में, right? Enfranchise was new, suffrage was new, deliverance was new, emancipation is important. So this was a nice, sweet mini cluster on freedom. Tell me, क्या आप खुद अपने clusters नहीं बना सकते? Of course you can. It is so easy. But the problem is that students don't understand which words must they include because there's so many suggestions coming up, right? When you Google it up or when you look up a thesaurus, you'll find there would be hordes of words coming and you would be confused कि कौन सा word important है, कौन सा नहीं है. तो बस problem यही होती है. No issues, I am there to help you, है ना? Okay. And finally, the last root that we are doing today, parity. And parity comes from par. So जब हम कहते हैं disparate means it is something which is not the same as others. Disparate identities. मतलब अलग अलग. They are not same. So they belong to different classes or groups. Simply समझिए, not same because this is a negative prefix. Par का मतलब भी equal होता है, as I've already told you. So disparate is not same. Parity is equality. At par हम कहते हैं ना. For example, I say that this product is at par with all its competitive rivals or with all its competitors. So at par, when you are at par with somebody, आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, आप उसके बराबर हैं, ठीक है ना? Disparage, interesting word. जब आप किसी को disparage करते हैं, disparaging comments pass करते हैं, that is when you actually don't consider them equal. You're belittling them, demeaning them, you're showing them down. ठीक है? तो आप उनको क्या कर रहे हैं? आप उनको एक तरह से नीचा दिखा रहे हैं, आप उनको worthless बता रहे हैं. That is to disparage. Non-pareil. What is non-pareil? Interesting word. ये बहुत interesting और important words हैं जो मैं आपको बता रही हूं. ठीक है? ये तो पता ही होगा आपको. Non-pareil मतलब not the same. अगर मैं किसी चीज को non-pareil बोल रही हूं, I mean that इस चीज के कोई टक्कर नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है. Nobody is coming close to it. What would you mean by that? ये चीज जिसको मैं non-pareil बोल रही हूं, it would simply mean that it is the best. There's nobody close to it, right? Of course, आपको एक example दूंगी. I say SuperGrads has no non-pareil. या फिर मैं सिंपली बोलूं कि SuperGrads is non-pareil in this industry. तो अगर मैं कह रही हूं ये non-pareil है, इसका मतलब है कि इनका कोई competition नहीं है, इनके कोई बराबर नहीं है. ठीक है? All right. डिस्पैरिटी आप जानते हो, जब इक्वालिटी नहीं होती है वो डिस्पैरिटी होता है. कंपेयर और इनकंपेरेबल भी इसी से बने. ये वर्ड्स नोन है, सो दे नीड नो एक्सप्लेनेशन. एंड फाइनली एक्सरसाइज टाइम किड्स. एक्सरसाइज ये है कि आपको कुछ वर्ड्स के लिए सेंटेंसेस मुझको बना के देना है यहाँ पर, राइट? यानी कि कमेंट सेक्शन में यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑन दीज वर्ड्स दैट आई एम राइटिंग डाउन फॉर यू. ठीक है? आज लास्ट सेशन था, कुछ डिफरेंट करना था. ठीक है? एंड ऑल्सो यस, if you have benefited from this series, do mention it in the comment section, right? तो words क्या है? Non-pareil, desegregation, equanimity. You can change the form, you can make it equanimous also. I don't have a problem. And finally, the last word would be
suffrage. This is your task, this is the exercise, okay? And I will be having a look at the comment section. I would be eagerly looking for your participation, right? Like, share, and subscribe to banta hi hai class. And with this, we are finally closing this series. Thank you so much. I hope that you will take it seriously. I hope that you will keep working on your vocabulary. और जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया इसको आप रोकेंगे नहीं. You will keep on working on your vocabulary and I am there by your side as and when you need my help. Just let me know. Thank you. Bye bye. Take care.